Hi, hello. Welcome back to my YouTube channel. I am Chidanand, a final year BMS student. In previous class, we started the concept of Ekala Dravya Prayoga. Among that, we completed Guduchi. Today, we are going to discuss about three more formulations of Amalaki. Three more formulations of the Amalaki. This is continuation of the Amalaki. Okay. The first formulations of the Amalaki it is. This is sixth one, okay. In previous class, we completed five formulations of the Amalaki. These are three more formulations of Amalaki, okay. Amalakyadi Gutika. Gutika refers to tablet. Tablet or pill. Tablet or pill, okay. Amalakyadi Gutika. The ingredients of Amalakyadi Gutika, they are Amalaki, Kamala, Kushta, Laja, Vatarohaka. Amalaki, Kamala, Kushta, Laja, Vatarohaka. Each taken as one part. How many parts? Each taken as one part. One part Amalaki, one part Kamala, one part Kushta, one part Laja, one part Vatarohaka. All are taken as all, each means each taken as one part, and the quantity sufficient. Madhu here refers to the honey quantity sufficient. Method of preparation of Amalakyadi Gutika. Using Kalva Yantra, grind each ingredient separately. कितना ingredients? Amalaki, Kamala, Kushta, Laja, Vatarohaka. These are ingredients. You have to pound them each separately. Make them into coarse powder. Later, you have to filter to remove coarse particles. Coarse particles remove करने के लिए filter करना पड़ेगा powder को. Combine all powders together and it is mix it properly. फिल्टर होने के बाद वो पाउडर होता है ना, सब अलग अलग होता है, उसको क्या करना चाहिए? कंबाइन करना चाहिए. कंबाइन करना चाहिए. मिक्स इट प्रॉपरली. होमोजीनियस मिक्सचर शुड बी डन. Then later add madhu. You have to add the honey until it becomes consistency to form tablet or pills. Tablets or pill. पाइन पाउडर हो गया. सब मिक्सचर का क्या हो गया? पाइन पाउडर हो गया. पाइन पाउडर होने के बाद हनी को तुम उसके अंदर डालना है टिल इट अटेन्स द कंसिस्टेंसी टू फॉर्म द पिल्स आर टैबलेट्स. पिल्स आर टैबलेट्स, ओके. Later, you have to dry it and it is collected and stored as Amalakyadi Gutika. It is stored as Amalakyadi Gutika. This is method of preparation of Amalakyadi Gutika. Okay. मात्रा कितना बताया है? सेम मॉडर्न में कैसे डोसेज बताता है ना, सेम एज इट इज हियर आल्सो. 500 mg. 500 mg and it is indicated in Trishna and Mukashosha. Trishna and Mukashosha कंडीशन में हम आमलक्यादि गुटिका को इंडिकेट कर सकते हैं. ओके, दिस इज अबाउट आमलक्यादि गुटिका. नाउ we move towards Tripala Ghruta. Tripala means Haritaki, Vibhitaki and Amalaki, right? Ghruta means this is the one among the preparation of the Ghruta. Okay, Tripala Ghruta. Here the main ingredients are Tripala. Main ingredients are Tripala. Okay, the shloka goes like Tripalaya Rasaprastham. Tripalaya Rasaprastham. Prastham Vasa Rasodbhavam. Prastha Vasa Rasodbhavam. Brungaraja Rasaprastham. Prastham Ajapayah Smrutam. These are ingredients of Dravadravya. Ingredients of Dravadravya. Datva Tana Gruta Prastha Kalkai Karshay Mitai Prutak. Tripala, Pipali, Draksha, Chandana, Saindavam, Bala, Kakoli, Kshira, Kakoli, Meda, Maricha, Nagaram, Sharkara, Pundarikam, Cha, Kamalam, Cha, Punarnava. These are ingredients of the Tripala Gruta. These are ingredients of the Tripala Gruta. Okay. Now, method of preparation देखेंगे हम. Method of preparation. They are saying we have to prepare the Kalka Dravya first. We have to prepare the Kalka Dravya first. Here, for the Kalka preparation, they mentioned Tripala. Tripala means Haritaki, Vibhitaki and Amalaki. Pipali, Draksha, Chandana, Saindava, Bala,
काकोली, क्षीर काकोली, मेधा, मरीचा, नागरा, शर्करा, पुंडरिका, कमला, पुनर्नवा. These are drugs mentioned to prepare the कल्क द्रव्य. कल्क द्रव्य, ओके, इन कलवा यंत्र में प्रिपेयर करना है. कल्क द्रव्य हो गया. Now prepare द्रव द्रव्य. Prepare द्रव द्रव्य. Here द्रव द्रव्य mentioned are ट्रिपल क्वाता. ट्रिपल क्वाता. क्वांटिटी कितना है? वन प्रस्ता. वन प्रस्ता रेफर्स टू द 768 ग्राम. 768 ग्राम. ओके. एंड वासा रसोद्भवम. वासा रसोद्भवम. प्रस्थ वासा रसोद्भवम. वन प्रस्थ ऑफ द वासा. वन प्रस्थ ऑफ द वासा मीन्स वासक्वात, त्रिपलक्वात एंड भृंगराजक्वात. भृंगराजक्वात. कितना लेना है? वन प्रस्थ ईच. वन प्रस्थ ईच. और वी कैन यूज अज दुग्ध. अज पह मीन्स अज दुग्ध. मीट, सॉरी, मिल्क ऑफ द गोट. वी कैन यूज दीज द्रव्यास as द्रव द्रव्य. We have to prepare Tripalakwata, Vasakwata and Bhringarajakwata. Vasakwata, Bhringarajakwata and Tripalakwata, and also Ajadugda also can be used as Drava Dravya here. Okay. Now mixing with Gruta Kalka Drava Dravya in a vessel. एक बड़ा सा वेजल लेने का. बड़ा सा वेजल लेके उसमें घृता, कल्क द्रव्य, द्रव द्रव्य आर मिक्स्ड टुगेदर. देन द हीटिंग ओवर मंदाग्नि. मिक्स करने के बाद, मिक्स होने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग यू हैव टू हीट ओवर मंदाग्नि. मंदाग्नि पे क्या करना चाहिए? हीट करना चाहिए. टिल इट अटेन्स सिद्धि लक्षण. अप टू दैट टाइम यू हैव टू हीट ओवर मंदाग्नि. लेटर you have to filter it, cooling and stored as tripalagruta. Stored as tripalagruta. Okay. Here the main ingredients are tripalakwata and vasakwata and bhringarajakwata and ajadugda. These are drava dravyas. Then kalka dravyas. Okay. This is method of preparation of the tripalagruta. देखो tripalagruta, it is 12 ग्राम. डोसेज कितना है? मात्रा कितना है? 12 ग्राम. एंड अनुपाना यूज्ड आर वार्म वाटर एंड वार्म मिल्क. वार्म वाटर एंड वार्म मिल्क. इट इज इंडिकेटेड इन तिमिर दर्शना. तिमिर दर्शना. चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है पेशेंट को, उस कंडीशन में तुम यूज कर सकते हो त्रिपलघृता को. एंड नेत्रस्राव. नेत्रस्राव, आईज में इरिटेशन हो रहा है, आई से लिक्विड आ रहा है तो तुम यूज कर सकते हो. And Patala Roga, this is related to the eye and blindness. In this condition, we can use the Tripalagruta. Okay. Now, this is common for all formulations. Common. Pharmacodynamics of Amalaki and pharmacokinetics of any dravya. कुछ भी हो, तुमको pharmacodynamics and pharmacokinetics याद नहीं है तो pharmacodynamics of any dravya. Okay. Not only Amalaki, any dravya, you can write as antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, and act as rasayana. Okay. Pharmacodynamics: absorption, distribution, metabolism, and excretion. Okay. Metabolism in liver and excreted through the renal system. हो गया. These are formulations of Amalaki. One more is there. Okay. Drava dravya for preparation of Chavanprasha we need drava dravya, sneha dravya, madura dravya and prakshepaka dravya. Okay. Remembering the ingredients is very difficult here, but I made the trick here. Okay. Drava dravya, for the preparation of drava dravya we need 42 drugs. How many drugs? 42 drugs चाहिए होता है. कौन सा है? देखो, अग्निमंत, बिल्वा, गांबारी, शोनाका, पातला, शालपर्णी, पृष्टिपर्णी, बृहदी, गोक्षुर, कंटकारी. These are 10 दशमूलस. Trick क्या है? देखो,
अभी नाम का एक लड़का है, अभी नाम का एक लड़का है। हियर शोप रेफर्स टू द डोंट कर्स अभी, डोंट कर्स द अभी, ओके। एंड इफ तुम कर्स दे दिया तो, शाप दे दिया तो उसको क्या होगा, वो मांत्रिक के पास जाके पुष्टिशाल पर्णिशे क्या भ्रू सुके गोक्षो मीन्स गो, गो मीन्स गो माता होता है कौ, एंड कंठ, गो, गो को क्या होता है, कंठ होता है। अबीग शोप हाकಬೇಡಿ, अबीग शोप हाकಬೇಡಿ, ಹಾಕಿದರೆ, ಹಾಕಿದರೆ ಪೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಲ ಭ್ರೂ ಅಂದು ಗೋಗೆ ಕಂಠವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ದ್ರವ ದ್ರವ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ದಶಮೂಲಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಶಮೂಲ, ಓಕೆ. Here a means B means bilwa, abiga, ga means gambari, shopa, shopa means shonaka and patala, shopa means shapa, shopa shapa, okay. And shala prushti, prushti shala bru, bru अंदु शाप, ब्रू मते गोक्षुगे कंठ, गो को क्या होता है, कंठ होता है, संकट होता है, ओके. दीज आर 10 दशमूलस, दशमूला. Now these बल मुद्गपर्णी, माशपर्णी, पिप्पली, कर्काटक श्रृंगी, तामलकी, द्राक्षा, जीवंती, पुष्करा. एंड नाउ देखो ये बहुत इजी है, ओके. नाउ नाउ इंटरेस्ट होता है ना. अब अगर अमृता और रिद्धि, अब अगर अमृता और रिद्धि जीवक ऋषभक के साथ, जीवक और ऋषभक के साथ पूना में मुस्त को मिलने गए थे. कौन किसको मिलने गए थे? अब अगर अमृता और रिद्धि जीवक ऋषभक के साथ पूना में मुस्त को मिलने गए थे. अभय, अगुरु, अमृता, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, पुनर्नवा, मेधा, मुस्ता. These are 10 drugs of the ingredients of the कौन सा, च्यवनप्राश, ओके. नाउ एला, चंदना, उत्पला, विदारी, वृषमूला, काकोली, Kanasika. These all 41 drugs are taken as one pala. One pala means each one pala, okay. Each one pala. One pala is equal to 48 grams. 48 gram each. Each dravya taken as one pala. And also Amalaki, it is taken as 500 Amalaki fruits. 500 Amalaki fruits, okay. Here water taken as 12.28 liters and it is reduced to 1/4, reduced to 1/4. And sneha dravya are ghruta and taila, each taken as 6 pala, each taken as 6 pala. Madhura dravya, they are matchandika and madhu. Matchandika is sugar 2.400 kg and madhu it is taken as 288 gram. प्रक्षेपक द्रव्य, they are तुगाक्षरी, it is taken as 192 gram. पिप्पली त्वक केलपत्र, पिप्पली त्वक केलपत्र केशरा, this is taken as, each taken as one pala. These are ingredients of the च्यवनप्राश. Now see the method of preparation. Method of preparation, you have to collect the all ingredients first. You have to collect the all ingredients first, and all the ingredients of dravadravya are taken and coarsely powdered and place them in a vessel. Each ingredient लेके उसको coarsely powder करके एक वेजल में डालना है. डालने के बाद मेक ए पोटली ऑफ आमलकी. 500 फ्रूट्स होता है ना आमलकी का, वो पोटली बनाना है. उसको क्या बनाना है? पोटली. Later you have to suspend in a vessel having 12.28 liter of water and it is boiled and reduced to 1/4, and it is boiled and reduced to 1/4. Then you have to remove the amalaki bundle from the vessel and strain the kvata and keep it separately. Strain the kvata and keep it separately. Later you have to take the pulp of the amalaki only, not the seeds, not the seeds. Only pulp of the amalaki is taken and it is fried with ghruta and taila. You have to take pulp of the amalaki and it is fried with ghruta and taila till moisture evaporate. Moisture नहीं होना चाहिए वहां पे, तब तक तुम क्या करना चाहिए? उसको फ्राई करना चाहिए.
after that add madura dravya, sugar, Matsyandika means sugar, and heated over mandagni till semi-solid consistency, later you have to add prakshepaka dravya, dravya and stir well and allow it to cool. Cool होने के बाद after cooling you have to add the honey, okay. At the last you have to add the madura dravya, honey, after adding the prakshepaka dravya, okay. Later you have to store it in airtight containers, में च्यवनप्राश को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। पहले हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे, पहले आमलकी का पोटली बना के, आमलकी पोटल सस्पेंड करके वाटर में डाल के वो रेड्यूस किया हमने, उसका पल्प निकाला, वो फ्राइड विथ घृता एंड तैल के साथ हमने फ्राई किया। उसके बाद मधुर द्रव्य को ऐड किया, उसके बाद प्रक्षेपक द्रव्य को ऐड किया, लास्ट में हनी को, मधु को ऐड करके हमने क्या बनाया, च्यवनप्राश बनाया, ओके। देखो डोसेज कितना लेना है यार, कितना लेना है डोसेज, it is taken as 12 to 24 gram, 12 to 24 grams with lukewarm water or milk in the morning time. It is ideal time for च्यवनप्राश intake. And indications, च्यवनप्राश is most widely and frequently used drug in Ayurveda. It is used in many conditions, respiratory conditions, for the purpose of cardiac, for the purpose of renal, बहुत सारे डिसीजेस में ये यूज कर सकते हैं हम। मेनली कास श्वास स्वरभेद, क्षित क्षीण हृद्रोग, मूत्र रोग, वात रक्त, शुक्र दोष, रसायन, मेद्य, स्मृति प्रद, जरा। In these conditions we can use the च्यवनप्राश. Mainly it is anti-aging, rasayana and kasa shvasa and hridroga, shukra dosha. In these conditions it act as most efficient formulation, okay. This is about your formulation च्यवनप्राश. If you have any doubts, comment below. For handwritten notes join my telegram. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो, शेयर विथ योर BMS friends and juniors. Please do support. Your support matters the most to do more videos like this. Thank you. Like, comment, subscribe Anand's classes.